Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. This is lecture number 20. The name of the paper is Introduction to Linguistics. The chapter is Semantics and the topic is Semantic Features. This lecture is specifically for the students of BS second semester GDC Public and also for the students of those colleges which are affiliated with Abdul Wali Khan University. You can see this is page number 113 and the name of the book is The Study of Language by Giorgio. You already have this book. So 113 is the page. This is the topic, semantic features. This is an important topic because you will again have to study semantic features in fourth semester. Semantic features are also important for the basic conceptual meaning, because the conceptual meaning, as we have discussed earlier in the previous lecture, is the meaning which is also referred to as denotative meaning, that is the dictionary meaning. Whenever we check a dictionary for a word, for example, we find the different features which are referred to as semantic features of that word, and with the help of those semantic features we find out the meaning of one word which is different from the meaning of the other word. Semantic features, for example, if we take a word, let's say table, and we try to find out its semantic features, we discuss it with the help of binary discussion. Binary means two, that is either the quality or the semantic feature is present or it is absent. So if it is present, we use this plus sign. If it is absent, we use minus sign. For example, this table, this first quality of animate is not found in the table and therefore it is minus. Table is also not human, minus. It is not female, minus. It is not adult, minus. Taking this second word and its semantic features, this is a horse, for example. It is animate, therefore it is animate, yes, and therefore plus. It is not human, so minus. It is not female, so minus. It is an adult, therefore plus. And the same is the case with the other semantic features of these other words. So semantic features are discussed in with the help of binary discussion, which means either the quality is present, plus, or it is absent, minus. This is how we try to find out the meaning of a word. So for the basic conceptual meaning, the semantic features are important, but these features are also important for finding out and explaining whether the sentence is odd or not odd. Odd means strange. So this conceptual meaning and its characteristics help us, these semantic features, they help us in finding out whether the sentence is acceptable or not acceptable. For example, if we take this sentence, the hamburger ate the boy. Now this sentence is semantically wrong, but it is syntactically a perfect sentence. The structure is acceptable from syntactic point of view. There is a noun phrase, the hamburger, there is the verb, ate, and there is again the noun phrase, the boy. And this noun phrase verb, noun phrase structure is very much acceptable from the syntactic point of view. However, from the semantic point of view, the hamburger cannot be the subject of ate, because hamburger does not have the quality of eating something, etc. So this oddness is also explained with the help of semantic features, and we'll discuss it also in this lecture. The main point we'll discuss is that the semantic features help us, that is the basic conceptual meaning as well as semantic features, they help us in explaining the strangeness of a sentence from semantic point of view. Though a sentence may be correct from syntactic point of view, it can be wrong from semantic point of view. So for a sentence to give you the correct meaning, it is important that it is correct from the syntactic point of view
as well as semantic point of view. So the sentence is odd. This oddness or the strangeness of the sentence can be explained with the help of basic conceptual meaning, which is based on semantic features, as you know. So this is what we will discuss in this topic, semantic features. We will try to find out what are those semantic features which can become the subject of it. What are those words which have some specific semantic features which can become the subject of the verb it. So this is what we will discuss in this whole topic. In these two short paragraphs, we learn that semantic features or basic conceptual meaning helps us in explaining the oddness of the sentence. Then we'll read these three sentences. उर्दू में भी सुन लें. सेमेंटिक फीचर्स में हम ये सीखेंगे कि जो कंसेप्चुअल मीनिंग है, अगर आप इसको डिक्शनरी में चेक करें तो कंसेप्चुअल मीनिंग को अगर डिक्शनरी में चेक किया जाए तो आपको कुछ सेमेंटिक फीचर्स उसमें मिलेंगे, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेंगे जिसकी मदद से उसकी मीनिंग आपको क्लियर होगी. और यही जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके, ये सेमेंटिक फीचर्स कहलाते हैं. तो हम इस टॉपिक में सेमेंटिक फीचर्स में ये पढ़ेंगे. नंबर 1 के सेमेंटिक फीचर्स क्या हैं. हम ये डिस्कस करेंगे कि सेमेंटिक फीचर्स को हम बाइनरी तरीके से डिस्कस कर सकते हैं. बाइनरी का मतलब है दो, यानी अगर कोई कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद है तो हम कहेंगे प्लस, अगर मौजूद नहीं है तो हम कहेंगे माइनस. मसलन हॉर्स है, ये एनिमेट है, इसमें एनिमेट की क्वालिटी है तो प्लस, ह्यूमन की फीमेल की नहीं है तो माइनस माइनस, और एडल्ट की मौजूद है तो प्लस, और इस तरीके से इन और की. तो ये कहलाती हैं सेमेंटिक फीचर्स. सेमेंटिक फीचर्स हमें बताती हैं कि किस तरीके से एक लफ्ज दूसरे लफ्ज से डिफरेंट है. इस टॉपिक में हम ये डिस्कस करेंगे कि जो कंसेप्चुअल मीनिंग है जिसमें सेमेंटिक फीचर्स आएंगी, ये असल में वजाहत करती हैं किसी लफ्ज के ऑडनेस की, अजीब होने की, किसी जुमले के अजीब होने की. मसलन ये जुमला है द हैमबर्गर एट द बॉय, ये सिंटैक्टिकली बिल्कुल सही है लेकिन सेमेंटिकली ये दुरुस्त नहीं है, क्योंकि हैमबर्गर जो है इसमें ऐसी क्वालिटीज नहीं है, सेमेंटिक फीचर्स नहीं है कि ये एट का सब्जेक्ट बने. इसी तरीके से टेबल में वो सेमेंटिक फीचर्स नहीं है कि ये लिसन का सब्जेक्ट बने. हॉर्स में वो सेमेंटिक फीचर्स नहीं है कि ये रीडिंग का सब्जेक्ट बने. तो इसलिए इसकी वजाहत जो हमें मिलेगी वो बेसिक कंसेप्चुअल मीनिंग हमें हेल्प करेगा इसकी वजाहत में. तो ये हम पढ़ेंगे इन दो छोटे पैराग्राफ में, और फिर ये भी पढ़ेंगे कि ये सेमेंटिकली ऑड है लेकिन सिंटैक्टिकली ये बिल्कुल करेक्ट और सही है. तो हम पढ़ते हैं इसको, उर्दू में ट्रांसलेट भी करता हूँ, फिर दोबारा इंग्लिश में भी जाएंगे. वन वे इन विच द स्टडी ऑफ बेसिक कंसेप्चुअल मीनिंग माइट बी हेल्पफुल. एक तरीके से बेसिक कंसेप्चुअल मीनिंग हमें हेल्प करता है, वुड बी, वो तरीका ये होगा एज ए मीन्स ऑफ अकाउंटिंग फॉर द ऑडनेस, कि ये एक जरिया है, ये बेसिक कंसेप्चुअल मीनिंग, कि ये हमें तफसील बताता है कि ये जुमले क्यों ऑड और अजीब हैं. वी एक्सपीरियंस व्हेन वी रीड सेंटेंसेस सच एज द फॉलोइंग, कि ये ऑडनेस हमें क्यों महसूस होती है जब ये जुमले हम पढ़ते हैं. ये हैमबर्गर एट द बॉय, हैमबर्गर ने लड़के को खाया. द टेबल लिसन्स टू द रेडियो, टेबल रेडियो सुनता है. द हॉर्स इज रीडिंग द न्यूज़पेपर, तो ये ऑड है. We should first note, हमें ये नोट करना चाहिए that the oddness of these sentences does not derive from their syntactic structure, कि ये जुमले अजीब हैं लेकिन सिंटैक्स की वजह से नहीं है. सिंटैक्स का मतलब है arrangement of words in a sentence, ये ठीक ठाक है. According to the basic syntactic rules, बुनियादी syntactic rules for forming English sentence का जहाँ तक ताल्लुक है, इसके मुताबिक ये well formed structures, स्ट्रक्चर बिल्कुल सही और दुरुस्त है. तो दी हैमबर्गर नाउन फ्रेज है, ये एट वर्ब है और ये नाउन फ्रेज है. इन दिस नेक्स्ट पैराग्राफ वी विल लर्न
about the source of the problem. The source of the problem, of course, is that the semantic features of hamburger are not such that it could become the subject of the verb ate. While the boy ate the hamburger is 100% acceptable, and it is correct from both semantic point of view and syntactic point of view, but hamburger ate the boy is semantically wrong, syntactically correct. So why can this be the subject of it and this cannot be the subject of it? Because hamburger is does not have those semantic features. That is, the eating process cannot be done by the hamburger. तो ये हम इसमें पढ़ेंगे कि ये जो सोर्स ऑफ प्रॉब्लम है वो ये है कि हैमबर्गर की सेमेंटिक फीचर्स बॉय की सेमेंटिक फीचर्स से डिफरेंट है. इसकी सेमेंटिक फीचर्स ऐसी नहीं है कि ये सब्जेक्ट बने एट का, एट करने वाला बन जाए, खाने वाला बन जाए, तो ये नहीं. लेट मी ट्रांसलेट इट फॉर यू. दिस सेंटेंस इज सिंटैक्टिकली गुड बट सेमेंटिकली ऑड. ये सेंटेंस सिंटैक्टिकली ठीक है, सेमेंटिकली ऑड है और अजीब है. Since the sentence the boy ate the hamburger is perfectly acceptable, ये जुमला तो बिल्कुल acceptable है. We may be able to identify the source of the problem. तो हम source of the problem मालूम करते हैं. The components of the conceptual meaning of the noun hamburger, hamburger के जो components है जिनको semantic features हम कहते हैं, must be significantly different. ये वाज़े तौर पे मुख्तलिफ है from those of the noun boy. noun boy से hamburger की कैसे मुख्तलिफ है? hamburger ईटिंग नहीं कर सकता, बॉय ईटिंग कर सकता है. thereby यूं preventing one, ये एक लफ्ज जो है ये नहीं बन सकता एट का सब्जेक्ट एंड नॉट द अदर, दूसरा बन सकता है. हैमबर्गर नहीं बन सकता, बॉय बन सकता है. फ्रॉम बीइंग यूज्ड एज सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब एट, एट का सब्जेक्ट. द काइंड ऑफ नाउन दैट कैन बी द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब एट, वो नाउन एट का सब्जेक्ट बन सकता है जिसमें must denote an entity, इसमें ऐसी कोई क्वालिटी जाहिर हो that is capable of eating, कि वो ईटिंग के काबिल भी हो, फिर तो सब्जेक्ट बन ही नहीं सकता एट का. The noun hamburger does not have this property. noun hamburger में ये semantic फीचर नहीं है and the noun boy does, और noun boy में ये semantic फीचर मौजूद है. तो ये this was all about this short paragraph. In this next paragraph, we try to find out the elements or the features of meaning or semantic features of those subjects which can take it as the verb. So those subjects must be, one of the characteristics must be that they are animate being, they are living thing, because non-living things are not able to eat something. And when this characteristic is present, we use plus sign. When a characteristic is absent, we use minus sign. Boy, for example, is animate, so we say plus animate. And hamburger, for example, is not animate, so we say minus animate. तो हम इस पैराग्राफ में अभी हम पढ़ेंगे कि जो एलिमेंट्स और फीचर्स ऑफ मीनिंग या सेमेंटिक फीचर्स हैं, ये कौन से सेमेंटिक फीचर्स होने चाहिए किसी लफ्ज में ताकि वो एट वर्ब का सब्जेक्ट बन जाए. तो हम मालूम करते हैं कि एनिमेट होना इसके लिए जरूरी है, जानदार होना. अगर कोई चीज जानदार नहीं है तो वो खाना तो कर नहीं सकती. तो बॉय में ये क्वालिटी मौजूद है कि ये एनिमेट है, तो हम इसको प्लस एनिमेट कहेंगे. हैमबर्गर में ये क्वालिटी मौजूद नहीं है तो हम इसको माइनस एनिमेट कहेंगे. So let me translate it for you. We can make this observation more generally applicable. हम ये जो मुशाहिदा हमने किया इसको अप्लाई कर सकते हैं by trying to determine the crucial element, और हम कोशिश करेंगे कि जो अहम एलिमेंट है, फीचर ऑफ मीनिंग है, सेमेंटिक फीचर है, that any noun must have, जो एक नाउन में होना चाहिए in order to be used as a subject of the verb ate, ताकि वो सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब ate बन जाए, ये होना चाहिए. तो कौन से होंगे? Such an element may be as general as, तो एक जनरल एलिमेंट होना चाहिए इसमें, animate being के ये जानदार हो. We can then use this idea to describe part of the meaning of the words. तो फिर हम इस आइडिया को इस्तेमाल करते हैं और ये एक सेमेंटिक फीचर बन जाएगा
पार्ट ऑफ द मीनिंग ऑफ द वर्ड बन जाएगा, एज आइदर हैविंग, तो अगर है तो प्लस, और नॉट हैविंग, अगर नहीं है तो माइनस दैट पर्टिकुलर फीचर. सो द फीचर दैट द नाउन बॉय हैज इज प्लस एनिमेट, इसमें तो है denotes an animate being, and the feature that the noun hamburger has is minus animate, does not denote an animate being. So this was something which we learnt in this short paragraph. In this next short paragraph, we learn a few examples and their semantic features. For example, we take table and we consider its animateness, which is negative. A human being, it is not human, therefore negative, negative, negative. So all these characteristics are negative in them. However, taking horse, we say that it is animate, yes, plus human female qualities are not there, minus minus, and adult, it is adult, therefore plus. Boy has the first two characteristics, therefore plus, and boy is not female or adult, therefore minus. Man has two first characteristics and the last characteristic, it is animate, human, and adult, but it isn't female. Girl A has the first three characteristics, animate, human, female, but it is an adult, so minus. Woman has all these four characteristics, it is animate, human, female, and adult. So this is what we'll discuss in this next paragraph. इस पैराग्राफ में हम सीखेंगे कि सेमेंटिक फीचर्स को की कुछ एग्जाम्पल्स क्या हैं. ये चार एग्जाम्पल, पाँच छह एग्जाम्पल्स हैं, और इनमें जो बाइनरी कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या आया एनिमेट है कि नहीं है, ये नहीं है, ये है, ये है. ह्यूमन ये है कि नहीं है, तो ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है, ये वाला है, ये और ये सारे हैं. तो हम इसको डिस्कस करेंगे. दिस सिंपल एग्जाम्पल इज एन इलस्ट्रेशन. ये जो सबका एग्जाम्पल हमने ऊपर किया, ये वजाहत करता है ऑफ ए प्रोसीजर, उस प्रोसीजर की फॉर एनालाइजिंग मीनिंग इन टर्म्स ऑफ सेमेंटिक फीचर्स, कि हम मीनिंग को सेमेंटिक फीचर्स के लिहाज से कैसे डिस्कस कर सकते हैं. सेमेंटिक्स को और लिहाज से भी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन एक लिहाज से सेमेंटिक फीचर्स बताना है, जो कि अगरचे काफी नहीं है, लेकिन एक अहम हिस्सा सेमेंटिक फीचर्स भी है. फीचर्स सच एज एनिमेट, plus animate, minus animate, plus human, minus human, plus female, minus female, for example, can be treated as the basic elements. ये बुनियादी elements हम कह सकते हैं, involved in differentiating the meaning of each word in a language from every other word. कि ये हर word को दूसरे लफ्ज से मुख्तलिफ कर सकते हैं. If we had to provide the crucial distinguishing features of the meaning of a set of English words, अगर एक English words का set हम ले लें, इसकी क्रूशल डिस्टिंग्विशिंग यानी फर्क बताने वाली कि ये कैसे मुख्तलिफ है कैरेक्टरिस्टिक देखें, टेबल, हॉर्स, बॉय, मैन, गर्ल, वुमन की. यू कैन बिगिन विद द फॉलोइंग डायग्राम. तो वो इस डायग्राम से हम कर सकते हैं. मैंने इस डायग्राम को आपके साथ डिस्कस भी किया. इन दिस नेक्स्ट पैराग्राफ वी विल डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गर्ल. फॉर एग्जांपल, गर्ल इज ह्यूमन, देयरफॉर प्लस ह्यूमन, इट इज फीमेल प्लस female, it is not adult, therefore minus adult. And we will also discuss this sentence in which this slot is left behind in order to find out what is the source of the problem. Why can't a noun be used here which does not have the characteristic of reading? So which subject can appear as the subject of reading, that will be found out here. And why and when can this sentence look odd? What are those subjects which are used here and will make this sentence odd? So reading is the characteristics, as we have already discussed, which can be done only by humans. So this is the general characteristic. So which nouns then will make this whole sentence odd? Those nouns which are not human. For example, table, horse, hamburger. If you put table, horse, hamburger here, the sentence will look odd. इस sentence में, इस paragraphs में हम पढ़ेंगे कि girl की characteristic plus human plus female minus adult है. और हम ये भी पढ़ेंगे कि ये sentence अगर आप देखें तो reading का जो subject बन सकता है वो at least human होना चाहिए. तो odd वो जुमला बने, ये तब बनेगा जब यहाँ पे नॉन ह्यूमन इन एनिमेट ऑब्जेक्ट टेबल, हॉर्स, हैमबर्गर लगाया जाए,
तो ये ऑड बनेगा. लेट मी रीड इट फॉर यू फ्रॉम अ फीचर एनालिसिस लाइक दिस. ये ऊपर जो फीचर एनालिसिस हमने किया, इससे वी कैन से, हम कह सकते हैं दैट एटलीस्ट पार्ट ऑफ द मीनिंग ऑफ द वर्ड गर्ल, के वर्ड गर्ल का की मीनिंग का कुछ हिस्सा इन इंग्लिश में इन्वॉल्व्स द एलिमेंट्स, तो उसमें ये एलिमेंट शामिल है, प्लस ह्यूमन प्लस फीमेल माइनस एडल्ट. We can also characterize the feature that is crucially required in noun in order for it to appear as a subject of a particular verb. हम अब ये भी क्वालिटी देख सकते हैं कि कोई सब्जेक्ट किसी वर्ब का कब सब्जेक्ट बन सकता है, कोई नाउन, उसमें कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए. सप्लीमेंटिंग द सिंटैक्टिक एनालिसिस विद सेमेंटिक फीचर्स. तो अब हम सिंटैक्टिक एनालिसिस भी का हेल्प भी लेंगे और सेमेंटिक फीचर्स का भी लेंगे. तो ये जो सेंटेंस है, द नाउन इज रीडिंग द न्यूज़पेपर, तो इस नाउन की जो क्वालिटी है वो प्लस ह्यूमन जरूर रहने चाहिए, वरना तो रीडिंग के लिए ये सब्जेक्ट नहीं बनेगा. दिस अप्रोच वुड गिव अस द एबिलिटी टू प्रेडिक्ट, और यूं हमें प्रेडिक्शन का मौका मिलता है विच नाउन्स मेक दिस सेंटेंस सिंटैक्टिकली ऑड, कौन से नाउन्स है जो इस सेंटेंस को ऑड बनाएंगे. Some examples would be table, horse and hamburger. ये कुछ example हैं, ये इसको odd बनाएंगे because none of them have the required feature plus human, क्योंकि required feature plus human इन तीनों में से किसी में भी नहीं है. In this next paragraph, we will try to learn that semantic features are not enough for giving us the meaning of a word. That is, we will discuss that the semantic features are not without problems. The problem is, for example, if you want to give the features, semantic features of advice, threat and warning, how would you differentiate these three words with the help of semantic features? If we try to find out the semantic features of advice, we would of course not be very successful in this regard. This means that only semantic features are not enough for giving us the meaning, and there is something more to give us the meaning of a word. This is what we will discuss. Paragraph में हम सीखेंगे कि semantic features सिर्फ आपको meaning नहीं दे सकते, सिर्फ semantic features अगर आप लें तो आपको मसला भी हो सकता है, कुछ में नहीं भी होगा, कुछ में. अब एडवाइस की semantic features आप कैसे लिखेंगे, थ्रेट और वार्निंग की कैसे लिखेंगे, ये मेल फीमेल का चक्कर तो इसमें है नहीं, ये एब्स्ट्रैक्ट चीजें हैं, तो हम इसमें प्रॉब्लम है. नतीजा हमारा ये है कि सेमेंटिक फीचर्स जो हैं ये काफी नहीं है. सेमेंटिक फीचर्स के अलावा भी मीनिंग में कुछ और चीजें हैं, जिसको पढ़ते हैं. द अप्रोच जस्ट आउटलाइन, ये ऊपर जो अप्रोच हमने डिस्कस किया, इज अ स्टार्ट ऑन एनालाइजिंग द कंसेप्चुअल कंपोनेंट्स ऑफ वर्ड मीनिंग. ये वर्ड मीनिंग की कंसेप्चुअल कंपोनेंट्स यानी सेमेंटिक फीचर्स को एनालाइज करने का शुरू था. बट इट इज नॉट विदाउट प्रॉब्लम्स, इसमें प्रॉब्लम्स हैं. फॉर मेनी वर्ड्स इन लैंग्वेज इट मे नॉट बी एज इजी टू कम अप विद द नीट कंपोनेंट ऑफ मीनिंग. तो ये मुमकिन नहीं है कि हर लफ्ज का बिल्कुल नीट और क्लीन कंपोनेंट्स ऑफ मीनिंग्स आपको मिल जाए. इफ वी ट्राई टू थिंक ऑफ द कंपोनेंट्स और फीचर्स वी वुड यूज टू डिफरेंशिएट द नाउन्स एडवाइस, थ्रेट एंड वार्निंग. अगर हम ऐसे कंपोनेंट्स ढूंढने चाहें सेमेंटिक फीचर्स जो एडवाइस, थ्रेट और वार्निंग को डिफरेंशिएट करें, मसलन फॉर एग्जांपल, वी मे नॉट बी वेरी सक्सेसफुल, तो हम कामयाब नहीं होंगे. पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम सीम्स टू बी, हिस्सा इस प्रॉब्लम का एक हिस्सा ये है दैट द अप्रोच इन्वॉल्व्स अ व्यू ऑफ वर्ड्स इन अ लैंग्वेज, कि इस अप्रोच में जो व्यू ऑफ वर्ड्स इन्वॉल्व है एज सम सॉर्ट ऑफ कंटेनर्स, ये अल्फाज कंटेनर्स हैं. कंटेनर्स किस चीज के, मीनिंग के, सेमेंटिक फीचर्स के, दैट कैरी मीनिंग कंपोनेंट्स, जिसमें मीनिंग कंपोनेंट्स हैं. और ये सही नहीं है बास केसेस में. देयर इज क्लियरली मोर टू द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, लिहाजा ये वाज़ेह हो गया कि मीनिंग ऑफ वर्ड्स में कुछ और चीजें भी हो सकती हैं देन दीज बेसिक टाइप्स ऑफ फीचर्स, बनिस्बत इन बेसिक टाइप्स ऑफ फीचर्स के. So this was all about the semantic features. That's all about the semantic features. Thank you and good luck.